It was the most dangerous place in India. Even the police were afraid of the dacoits. No? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक मिनट, हम लोग लिबरल हैं, हम लोग पीसफुल हैं, हमारे यहाँ बस क्रेज है वेपन्स का, हम लोग किसी का बुरा नहीं करते। आपकी फेवरेट गन कौन सी है? 12 बोर। क्यों? क्योंकि इससे तुरंत पलटेगा आदमी। जरूरी नहीं है कि आपके पास गन नहीं है तो आपके पास में पावर नहीं है। आपका विल पावर कितना मजबूत है किसी चीज को करने के लिए। So we've just arrived in Madhya Pradesh's Gwalior, which is part of the Chambal region. This area was infamous for dacoits and lawlessness from the 1940s all the way through the 1970s. We hear a lot has changed since then, but news reports from as recent as 2020 show that there are still around 63,000 registered firearms in this area. So my colleague Tushar and I came to explore why exactly guns are still so popular in this borderland. Our first stop was Morena's oldest gun shop. In this gully, there were two places to buy firearms right across from one another, and a gun repair shop around the corner. India has some of the strictest firearm laws in the world, so this isn't a very common sight. So is this the most popular? This is the most popular because it's the most available gun in India. Okay. So what is the the price range? Price range around अब इसका माने आज करीब around 88,000, 80 to 90,000 plus taxes. So almost 1 lakh for this gun. Almost 1 lakh. Wow, that's quite costly, na? It's like purchasing a car. A car will be stay in your family for maximum of 10 years. The gun will stay for second generation up to third generation. उससे पहले तो लोगों को शौक भी था और शान समझते थे यहाँ पर तो बंदूक टांग के चलने का। रिपेयरिंग जैसे ही हमने बट बनाया है अभी, ये लकड़ी बनाया हुआ है। Next, we met with a group of locals who said they were comfortable speaking about gun culture in Morena. Almost every one of them brought a gun to the interview. असल में क्या है, बंदूक रखने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, मगर जो हमारा मेन उद्देश्य है, चूँकि हम राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, तो खुद की सेफ्टी और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा राजपूत का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। वही हमारा मेन मोटिव है। पर मकान ना लो, पहले बंदूक लगी, अब मकान बनवाओ। लगनी चढ़ती है इसमें, एक बार कॉक करने हो पूरे राउंड पार कर सकते हो। आपकी फेवरेट गन कौन सी है? 12 बोर। क्यों? क्योंकि इससे तुरंत पलटेगा आदमी। पुलिस को रोल दोबारा वकील को रोल। ज़मीन को आप अपने सर पे लेके नहीं चल सकते, राइट? टू शो ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, डोमिनेंस दिखाने के लिए यू कैन नॉट लिफ्ट इट ओवर योर हेड, राइट? तो आपको क्या चाहिए होगा विच इज़ बेसिकली विजिबल टू एवरीबडी इन फर्स्ट गो, तो कि यार इसके पास तो रिवॉल्वर का लाइसेंस है, इसके पास पिस्टल का लाइसेंस है, ये तो माउजर लेके चल रहा है। क्यों गन रखता है? एक शौक है यहाँ के लोगों का, चंबल का जो हिस्ट्री से अभी तक चला आ रहा है। सब कुछ नॉर्मली होता है यहाँ, शौक नहीं होते, शौक भी होते हैं जो लोग पहले से आए होते हैं। अब सब देख रहे हैं हम तो बचपन से।
To see if attitudes were different in rural areas, we traveled to a small village 1 hour outside of Morena. शहर में ज़्यादा खरीदते हैं कि गांव में ज़्यादा है? गाँव में ज़्यादा शौक है। गांव में ज़्यादा शौक। आप एक बार लेके जा सकते हैं जहाँ पे आप ये रखते हैं बंदूक, वो देख सकते हैं जगह? कहीं भी रख दो, जैसा जिस कमरा में हम बाहर भी रख लेते हैं, जैसे कोई है नहीं घर पे तो ऊपर रख लेते हैं। बट भरी नहीं रहती है। भरी नहीं रखते हैं, भरी तो बच्चा देखो जो ऐसा है जिन्होंने रखी तो कई कांड हो जाते हैं तो लगा के नहीं रखते। आप उन्हीं ने भेजिए, उन्हें नहीं भेजे तो हमें तो उनका विश्वास है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं उनका विश्वास है, और विश्वास नहीं हो तो तुम्हें क्या है भैया, हमारा हम पे बंदूक है ही नहीं है, मैंने कहा क्या हुआ जाने। In 1972, more than 600 Dakets surrendered in this Gandhi ashram. It was kind of like a watershed moment in Chambul's history. So I felt like what better way to come and understand the past and how things have changed than to speak with one of the last surviving Dakets, who still lives here today. जाने मैंने केवल एक ही दी है बस, और तो हमारे सामने हजारों लोग मारे गए। जैसे ऐसे कोई डकैत बन गया, नया डकैत बन गया, तो अपने दुश्मन को मतलब रेंजिस वाले को खुद ही गोली मारेगा, वो दूसरा नहीं मारेगा, उसकी सपोर्ट के लिए जाते थे। मुझे 20 साल हो गया है, 5 साल जेल में रहा, 5 साल जेल में रहा समर्पण के बाद में। जेल से छूटने के बाद फिर नौकरी की। बहुत देखा है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, सैकड़ों परिवारों को, हजारों को नुकसान हुआ है, बहुत हुआ है। वही तो देखा है सब हमने, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। Asha Sikarwar is one such example of a family that suffered the consequences. Sikarwar is a known name in Morena and descends from a long line of Baghis. The term Baghi was used for someone fighting against injustice, while the term Dakat was used for someone involved in banditry, although the distinction can get blurry as both were known to be involved in violent crime. It means कि उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और कुछ चीज़ें थी जो लगान वसूली के लिए जो चलता था, उस चीज़ से बगावत की कि भाई गरीब जनता के लिए इतना लगान नहीं देना है हम लोगों को। तो इस लड़ाई के लिए उन्होंने अपना चंबल में एक राज्य चलाया था। सो आई एम प्राउडली सेइंग कि माय ग्रैंडफादर वाज बागी। A life outside the law eventually caught up with the Sikarwar family. Her grandfather was killed in a shootout, and her father lost his life in an encounter with police. मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। I'm sorry. क्योंकि कुछ नहीं होता, आपके पास से आपके ऊपर से एक साया चला जाता है। You feel very alone sometimes, you know, आपको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, वो गाइडेंस नहीं मिलता है। मेरा आज तक कभी आंसू नहीं निकले। फैमिली आपकी डिस्टर्ब होगी। मेरे घर से मेरे दादाजी गए, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हुई कि मेरे दादाजी के बाद में मेरे फादर के बाद में मैं नहीं चाहती थी कि हमारी फैमिली से कोई भी डिस्टर्ब हो।
That's when Sikarwar decided to turn around her family's legacy. She doesn't allow her immediate family members to own guns, and she said she doesn't like for others to bring firearms into her house either. बट वो कल्चर्स में निकलकर हमारे आसपास के एरिया में आप देखोगे कि अरे उनके पास में बंदूकें हैं, इनके पास में बंदूकें हैं, आपके पास में भी होगी। हम बोलते कि नहीं मेरे पास में तो नहीं है, मतलब डैडी के पास से चली गई तो फिर हमारे पास में तो नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज आप उस फैमिली को बिलोंग करते तो आपके पास में होगा। तो मैंने बोला कि हाँ अब एक और दूसरी चीज़ मेरे पास में है। मैं कि उस समय दादाजी के पास बंदूक थी, अब मेरे पास में मेरी कलम है। Now, 50 years after the Great Surrender, a calm has settled over Chambal. The gangs have been dismantled, and registered guns don't flow as freely as they used to. Morena actually is a very safe and peaceful place. आज भिंड से, मुरैना से बहुत लोग देश की सेवा के लिए आगे निकल रहे हैं। हर मसले पे बहुत आगे हैं। आप पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, आप हर चीज़ की बात कर लीजिए। तो जो नेगेटिव छवि है उसे ख़त्म करने का मैं आप लोगों के माध्यम से प्रयास करना चाह रहा हूँ और आपसे अपील करना चाह रहा हूँ। About how many guns do you sell a month? What do you say? Nowadays maximum yearly sale I think 10 to 20 guns. तो आज मतलब गन्स की इतनी सेल नहीं है, तो वी आर मेंटेनिंग दिस शॉप जस्ट फॉर द सेंटिमेंटल वैल्यू। हमारे बाद में अब कोई करने वाला नहीं है, यही एंड है। There are also new reasons for gun ownership. The region has limited job opportunities, so a firearm can help you earn more money as a security guard. गन के पैसे अलग से मिलते हैं और गार्ड के पैसे लगते हैं। इसके 2-3-4 हज़ार रुपये जो भी है जैसे उसके बढ़ के मिलते, गन से पैसा ज़्यादा मिलता है। So far, many people have told us that crime and registered gun sales are down. But after digging deeper, we've realized that the actual issue is with unlicensed firearms, which include small handmade guns called kattas. Authorities have told us that there are likely as many kattas in circulation as registered guns. We met with one person who is willing to speak to us on the record anonymously about the reality of securing illegal firearms. मोरेना भिंड एरिया में कट्टे की प्रॉब्लम है, चंबल और ऐसे कुछ नहीं। प्रॉब्लम तो है ही, हर किसी पे मिलता है हमारे भिंड मुरैना में, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई वैसा मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है ना, उस वजह से। तो ज़्यादा उसकी प्राइस भी नहीं है, 3 या 4 हज़ार रुपये में मिल जाता है, क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं बनता। कोई क्राइम पे अगर आप पकड़े जा रहे हो, आपको पता है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो कोई भी कहीं भी फेंक देता है, क्योंकि वो उसकी उतना महंगा नहीं है ना वो, तो कोई फेंक भी देता है। मैं चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते थे आप? अब चेहरा तो इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी एक क्राइम है ना यहाँ का। आपने क्यों ऐसा किया, क्यों किया, वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। When you are unarmed and you will feel angry, you will get angry, then you will attack your enemy with your hand, or you will shout or like that. But if you have got gun, then you will certainly fire. So this changes the whole scenario. Tracking down kattas bought in black is a difficult task. That's why Bhind Superintendent of Police Manoj Singh has had to get creative. He wants to try QR coding bullet casings so that the forensic evidence left at a crime scene can be traced back to its owners. Now we are focusing it here once again. So what are we printing on here? We are going to print QR code on it. Okay. Okay. It took like
Not even 1 second. Yes, it's so fast. It's so fast. Yes. Suppose that your name is Niti, then we will just code the Niti name, and you will through infrared we will code it on the bullet. So if you will fire, then from the blank bullet through QR code reader we can read कि oh, this bullet belongs to Niti. Since the production and sale of bullets is centralized, Singh's scheme won't be able to be rolled out on a massive scale without government buy-in. रफ एस्टिमेट पुलिस के हिसाब से अराउंड 1.5 मिलियन बुलेट्स जो हैं वो भिंड में हैं. If we will able to code only 10% of this bullet, तो we can bring down the gun violence. ये हम लोगों का प्रयास है. After spending 5 days in Chambal, it seems that the area's reputation is not what you've seen in the movies. Although the reasons have changed, there's still a gun in nearly every household. So it'll take time for this community to turn around its legacy.